सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सहाफती, इस्लामी। We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और दूसरों को देखने की तलकीन भी कर रहे होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उससे तमाम तर पाकिस्तानियों को बड़ी फ़िक्र है। जो बैरून ममालिक में आबाद पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अपनी मट्टी से प्यार रखते हैं और वो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी में लिपटा हुआ है और पहले दहशतगर्दी का एक अंदाज़ था कि छोटे मोटे धमाके हो गए, लेकिन अब दहशतगर्दी में शिद्दत आ गई है और ये अब दहशतगर्दी नहीं रही, ये अब जंग है। ये खुली जंग है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इसमें खुफिया हाथ जो हैं वो शामिल हैं। अब पाकिस्तान पे वार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी को तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के जो P3 प्लेन हैं उनको अटैक करके ख़त्म करने का मकसद ये था कि जब भी कोई दुश्मन पाकिस्तान पे अटैक करे बाय एयर तो उनके पास कोई सिस्टम ना हो। तो ये हमारी फ़ौज को और ये हमारे हुक्काम बालग को समझना चाहिए। फिर दूसरा अटैक हालिया जो एयरपोर्ट पे हुआ वो बड़ा इंदोनाक हादसा था, बड़ा शदीद था और वो पाकिस्तान को तबाही के किनारे खड़ा करने वाला हादसा था, क्योंकि ऐसे मौके पे पहले ही एयरलाइन जा चुकी हैं। अब जो बची कुची हैं वो भी एयरलाइन पाकिस्तान से फ़ारिग हो जाएंगी। वो कहेंगे जी अब दुबई से फ़्लाई करें। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज का ये फ़ैसला बहुत सही है कि वो दहशतगर्दों को क्लीन करें, फ्लश आउट करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छेड़े जाने वाली जंग का मुकाबला किया जाए और उसको जीता जाए। और अब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, कामरान करे और पाकिस्तानी आवाम से दरख्वास्त है जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान की दाम में दर में सुगने मदद करें। और मैं समझता हूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करता है, पाकिस्तान की इमेज, सकाफ़त, ट्रेडिशन, कल्चर, ब्रिजेज़ बनाता है पाकिस्तान के लिए। और सफ़ीर पाकिस्तान को नहायत अफसोस है जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में कि हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं लेकिन वहाँ पे हमारे तमाम ख्वाबों पे मट्टी फेर दी जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम डाला है शीला जैक्सन का, जो वाकई काफ़ी प्रो पाकिस्तानी हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तानी कांग्रेस कॉकस की और बहुत ही हर दिल अजीज़ कांग्रेस वूमेन हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी ह्यूस्टन ने बढ़ चढ़ कर इनको सलाम किया और उनके लिए फंड रेज़ किया और एज ए फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान उनको पेश किया। तो वो रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा डेफिनेटली लोकल ग्लोबल में बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो ह्यूस्टन से, डैलस से और लॉस एंजल्स से, वो तमाम रिपोर्टें आज अपने प्रोग्राम में आप देखेंगे। आइए आपको ले चलता हूँ आज के मशहूर सेगमेंट प्रोग्राम लोकल ग्लोबल।
नाज़रीन, तो आइए आपको ले चलते हैं लोकल ग्लोबल में, देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने आपके लिए क्या क्या रिपोर्ट ह्यूस्टन से, शिकागो से और LA से रवाना की है। मुलाहिदा फरमाइए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, शीला जैक्सन पाकिस्तानी कांग्रेस कॉकस की चेयरमैन हैं और मारूफ और मशहूर कांग्रेस वुमेन हैं। टेक्सास में हर दलील अजीज़ कांग्रेस वुमेन के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। जब भी कोई मौका हो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आवाज़ बन के उभरती हैं। पिछले माह एक खुसूसी तकरीब में फ्रेंड्स ऑफ शीला जैक्सन के एजाज़ में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और $1 लाख का चंदा जमा किया गया। इस तकरीब के रुए रवाते जनाब जावेद ताहिर, सईद शेख और डॉक्टर आसिफ कदीर। ये तकरीब हर लिहाज से कमी भी से हमकिनार रही। मुलाहिदा फरमाइए ये रिपोर्ट। देखें, we are friends of Sheila. Sheila is a friend of us. Sheila is a friend of Pakistan. And we have gathered here to tell that we are really her friend and we have raised $100,000 for her. And I have written a special poem of love for her, that she is our leader. She is pride of our nation. She is Sheila Jackson, Sheila Jackson. On behalf of the GeoTV and Safira Pakistan. Pleasure to see you And this evening. Thank you. And we always welcome what you have done for Pakistan and what is your views and opinion and thoughts. And today I would like to ask you very simple questions. What message you are taking away from this whole event today? Well, it's good to see you. We see each other often in Washington, and you know that we are working on issues that impact the United States and Pakistan. Tonight, we worked on the personal relationships and the friendship between the Pakistani American community and Congresswoman Sheila Jackson Lee, but as well an opportunity for civic participation in American democracy, and building on relationships, as I said, between Pakistan and the United States. Tonight, we listened to stories that were part of my journey working with the Pakistan community on charitable issues, working on issues of government, working on issues of crisis, working on issues to ensure that we had the kind of funding that Pakistan needed in its time of need. We recall stories of earthquakes, we recall stories of challenges, but we also talked about the ongoing friendship between the United States and Pakistan. So what I saw tonight was unity, relationships, friendship, and a commitment to work together, to work as Pakistani Americans and Americans, and to work in the international relationships between Pakistan and the United States of America. And how do you define about the role of the Pakistani American as an economic engine for the U.S. economy? It is vast. There are 120,000 Pakistani Americans here in Houston. They are contributors. They are small businesses. They're involved in the energy industry. They're involved in the technology industry, in the media. They have a vast amount of knowledge in science and medicine. And so it is important to make the economic engine that the community is known to the broader community. I know it. And I continue to encourage the interaction between small businesses in the minority community, Hispanics and African Americans, women-owned businesses, to interact with the Pakistan community. We've seen a number of joint ventures. I was delighted to see Congressman Nick Lamson here, who's been working with Pakistani Americans. We want to foster these partnerships. I want to see more of them to create a vast economic engine. And it's important for the message to be sent to Pakistan that Pakistani Americans are well respected here in the United States and create an enormous economic engine that not only helps the United States, but it also helps Pakistan because they have a true commitment to making sure that they provide a link to Pakistan. And as we talked about tonight, I'm very interested in children. And I see the future of children in Pakistan as being great. And so we want to work together to be able to have a pathway of success for Pakistani Americans, but also the children in Pakistan. And one example of that is a little girl named Malala, who's
heroic episodes is now known around the world. And I've introduced H.R. 60 to ensure that she receives the acknowledgement and recognition through a Congressional Gold Medal. I'm asking all of the Pakistani Americans to encourage their members of Congress to sign on to this legislation to honor this little girl. Again, the other HR 38, the code that they are supporting the poor and women's as the Malala Act. Yes, there are. That is about education. There are a lot of good bills that salute her. This one would give her a Congressional Gold Medal, which would enhance her status around the world as she speaks about the need to empower little girls to be educated. Thank you, Sheila Jackson, for your contribution and the support. Thank you so very much. It's good to be with you. Whatever we have done, that has a very true picture of the Pakistani American community for Congresswoman Sheila Jackson Lee. We all know who she is. We all know how die-hard person in the interest of Pakistan. I pay tribute, I pay respect, and I'm very glad that tonight we have this honor. This is a first step towards having the Pakistani American community support for Congresswoman Sheila Jackson Lee. We pledge, we will continue to do that, and definitely be like the way she has been our true friend. We will be always be very true fan for Honorable Congresswoman Sheila Jackson Lee. I want to have her input and true expression how she felt tonight about the event. Congresswoman. I'm very grateful for the friendship. And as I indicated in my remarks, I'm very excited about the unity of so many leaders from the Pakistan community being here. It was a beautiful event. I was delighted to be with this wonderful, outstanding steering committee. Mohammed Sheikh, you have been a great champion and leader in the community, and your presence and your embrace of this event gives me great comfort that this will be something that we can do annually, building on relationships, building on unity, building on the growth of the community, building on the recognition of the community. So I was very humbled to be here with my husband and my daughter. From my family to this great community, we say thank you. And it was a very, very, very well-received, well-attended event, but with a lot of information, which I thoroughly appreciated. Again, I was humbled, and I thank everyone who was involved in it tonight. Thank you, Congresswoman. By having your presence with me, standing right with me, I want to thank the entire community for helping me, for helping the entire host committee, the efforts of chair of this event, Tahir Javed, Dr. Asif Kadir, Dr. Yaqub Sheikh, Sajjad Barki, Taslim Siddiqui, Ghulam Bombewala, MJ Khan. We cannot forget these people, Khalid Khan. These are the people who are the true leaders of our community, and all together we have taken a first step because of your name. The community, after a very long time, are sitting on the same table, and you know that, and we need to continue that. I want to pay a very special respect to all the Pakistani media living in Houston. My very, very, very special tribute to the people who came all the way from out of town. I want to thank Mr. Iqbal Sheikh from Austin. I want to thank Mr. Javed Anwar's support from Midland. Although he's not here, he has sent his support. We need to rely more on him and continue to have his friendship to the Congresswoman to build days by days, year by year. And last, not the least, Geo and Jung Group. We cannot thank. They are the CNN of Pakistan. And we have Mr. Waqar Ali Khan from all the way from California. He has made his, commitment fulfilled here by having his presence here tonight. And Zahid Khanzada and his friends came from all the way from Dallas. So he's covering the television section, he's covering the print section. So they are real true pillars of our country. They have some issues now. I hope everything will be resolved, and we are continue to count on your support as the co-chair of the Pakistani Congressional Caucus for the interest of Pakistan. And thank you for your help, your staff member, Ivan, everybody for serving our community. One of the leading personality here to behind the entire fundraising show. So what's your views about this today's event? This is beautiful, energetic, and great. We all enjoyed it, and Sheila Jackson Lee is well deserved for all this contribution. And
praise, and we have done for her, and hopefully we'll do it almost every year or every other year. नादिन, पाकिस्तान में यूँ तो लातादाद रिफाई और फलाई इदारे काम करते हैं और उन्हीं रिफाई इदारों की ज़्यादातर फंडिंग बैरून ममालिक से होती है। इस साल बीना कामदार की साहबजादी ने पाकिस्तान में कायम शुदा होप की शाख लॉस एंजलिस में भी कायम कर दी है। पिछले हफ्ते एनाहाइम प्लाजा में होप के बैनर तले एक शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें गरीब और नादार बच्चों के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया और कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर इस तकरीब को कामयाबी से हमकिनार किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। And have inshallah a great program planned for you this evening. Thank you once again for being here with us. I would like to now turn the mic over to a new member of the Board of Directors of Hope USA, my sister, Hira Gamlar, or now I should say Dr. Hira Gamlar. Today I'm honored to be with you to celebrate and commemorate Hope USA and all its accomplishments in association with Hope Pakistan. As a new member of the Hope family, I would firstly like to thank the founder and chairperson of Hope Pakistan, Dr. Mubina Asfawala, President of Hope USA, Mr. Amr Jamil, who is not with us today, unfortunately, and Mr. Zafar Naqvi and the entire Hope team. You all have welcomed my sister and I with such open arms, and inshallah together, I hope to continue to work diligently and passionately for this amazing cause. Next, I would like to call on stage the Chief Coordinator of Hope USA, Mr. Zafar Naqvi, to explain exactly what Hope USA and Hope Pakistan do for the people of Pakistan. Dear brother and sister, I feel honored and privileged to share with you tonight about Hope USA and Hope Pakistan and how these two organizations work together to help poor and needy people in Pakistan. Hope USA is a non-profit organization registered in California as a 501c3. The management of this organization operates on volunteer basis. Thus, all the funds and your generous donations are used for the actual causes. It is my honor to introduce Dr. Mubina Asfawala. It is for a worthy cause that you have come, and I hope I will be able to say something about what we are doing and about what you can do for your country, staying away. And I'm sure all of you do a lot, but still we need lots of more people to join us. But before I go ahead, I would like to say special thanks to our new directors of Hope USA, Dr. Hira Gamlar and Dr. Sana Gamlar. And Beena has been introducing me to a lot of people. तो फिर ये कहना पड़ता है कि she is my class fellow. तो इस podium पर आकर मुझे I think that ये ऐलान करती हूँ कि Beena is my class fellow, and I'm really grateful to Beena for arranging this. And I hope that this way, I've come from San Francisco, and this is the 5th year that in San Francisco So Hope welcomes you all to Pakistan, the familiar green map of Pakistan. And we have a number of young people over here. Today we also have with us key members of our community, and I would like for them to come up and say a few words. So I would kindly request Councilman Ali Sajjad and Councilwoman Mary Sue to please come up on stage and say a few words as well. It's my great honor on behalf of City of Warner to participate in this wonderful event. And it is very encouraging to see all the kind people
like you willing to help. The world is going backward. We need to start for ourselves to touch those people that need us. So I'm very touched to see Dr. Bina and also my good friend from City of Warner, Mr. Kong and Mrs. Kong, and also Dr. Bina and her husband. They are initiate to support this. I'd like to present this certificate of recognition on behalf of the City of Artesia and the people of Artesia to Dr. Ira, Dr. Sana, Dr. Mubina, and Zafar Nakvi, sorry. So please come up and receive this certificate of recognition. We have many organizations in Southern California, and that's what makes me so proud to be part of this Pakistani community, because we help so many people through our donations, through our own charitable works. I would just right now like to call on stage Ms. Shaista Khan. We really, on behalf of Islamic Relief, we're actually very honored to be invited tonight. We see the work that is being done by Hope in rural areas. Dr. Mubina and her team are doing actually a wonderful job. They're going to Tata and Tarpar and all of these rural areas where normally people and organizations don't go. And I would like to call Ms. Shahina Wan to come up and say a few words. You know, all of you have been to so many fundraisers, but seeing you all here means a lot to us. And Bina is also part of MGYW, and that's for Women Grants. And we will be having a fundraiser for that on 14th of September in Northbury Farm Hotel. And please, if you guys can join us there, we will really appreciate. And thank you. Jazakallah khair. नाज़रीन, इस साल ऑरेंज काउंटी वुमेन एसोसिएशन ने इस बार लॉस एंजलिस की मरियम रशीद को उनकी बेकरार खिदमात और रिफाही फलाही कामों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़े एजाज से नवाजा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। While all of our nominees have made impactful contributions, the recipient of our 2014 Humanitarian of the Year Award has supported countless not-for-profit causes throughout Southern California. She is a pivotal resource for the girls and women of the Muslim and South Asian communities. She has served 3 successive terms as president of the LA chapter of DIL, that's Development and Literacy, a nonprofit dedicated to promoting girls' education in Pakistan. And she serves on the board of SAHARA, South Asian Helpline Referral Agency Service, to help victims of domestic violence who are South Asian women. We honor Maryam Rashid, our 2014 Humanitarian of the Year. Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this chance to get this award. I don't know whether I deserve it or not, but it was up to the committee to decide, and I guess I'm very, very happy to receive the award. And I want to thank each and every person that is here for me today, and
and they have been here since I think 11:30 in the morning to come and support me and receive this award. Thank you, everybody. I love you all, and may Allah bless you. We're very proud of Maryam Appa. It's quite an accomplishment to be recognized by the Global Women's Association, and we're very, very proud of her. बहुत बहुत मुबारक देती हूँ मरियम आपा को। ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत बड़ा पाकिस्तान की वुमेन के लिए, और we really encourage her and congratulations. She really deserves this award on a humanitarian basis. She worked for the community all the time, everywhere, every event she's there to help. So we are really proud of her, and she deserves this, and we give her support and congratulations. She is the right person, and she should get it. We all are together. You all are with the team when we get her the award. Actually, she's not only one; she's working with the team. I'm very proud of my mother. She definitely deserves it. She's worked very hard her whole life helping others, so this is a nice culmination of that. Maryam Rashid is a wonderful person, humanitarian, works for different organizations, excellent fundraising chairperson. So congratulations, Maryam Rashid, on your award. We are so proud of you. You have made the Pakistani American and the Muslim community so proud with your humanitarian work. So accept our heartiest congratulations on this prestigious Coastline Award. Congratulations, Maryam. I was honored to be here and to see you receiving this award. You deserve it. You've been working really hard for the humanity. Congratulations, and Sana sent her congratulations with me because she had to be in class. I just left the office right now to come and see you. We're so proud of you. नाज़रीन, इस बार शिकागो में भी फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी पर सिस्टर सिटी लाहौर और शिकागो ने एक खूबसूरत प्ले पेश किया। आइए देखते हैं अंसारी दी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान शिकागो। इस वक्त मैं कल्चरल सेंटर शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर शिकागो सिस्टर सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम फैज़ अहमद फैज़ पर एक स्टेज ड्रामा मुनक्किद किया गया।
ख्वाबों पे नजर रखते हैं, वो इससे तो बेहतर आदमी नहीं हो। Representatives of Sister City Organization, ladies and gentlemen. First of all, I'm humbled that I have been asked to say a few words about a man who defined the last century across the world, and especially in South Asia. Faiz, people say that Faiz was even a bigger human being than a poet. And he was a man with multifaceted qualities and qualities of head and heart. And I must commend Riaz Babar Sahab that he has so beautifully portrayed it. Now for some audience, because I've said the cast and the audience are both from India and Pakistan. So Faiz साहब को एक बार मदऊ किया गया कि पाकिस्तान में जी आप पे बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो आप क्यों नहीं मुरतलन हैदर की तरह हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो उस पर फैज साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि हिंदुस्तान तो मेरी महबूबा है और पाकिस्तान मेरी मनकूबा है। तो it's a great event which they have organized today, and I must commend each one of you. Thank you so much. You know, everybody together, as Professor Sabi mentioned, that humanity has no limitations, with no boundaries. Like we saw the giants of previous centuries coming together, Che Guevara, General Akbar even, in his own ways. Everybody had a different way of trying to bring parity and equity to human beings. And that's very important, Like, that's a lifelong commitment. It's not an occasional act. It's a permanent attitude. And that's what we saw in Faiz. And not only in that once, but every time, whether he was having his fun time with his friends, his family, or whether he was in jail, or whether he was in paradise or Jannah, everywhere you saw that coming out of him, outpouring of something which makes me remind of the Dalai Lama. He said, kindness is my religion. So everything really begins with kindness. We have to really start looking around and trying to help other human beings. And that's what Sister City program is all about. We are very fortunate to have Sadia, so I would like you to give her a special round of applause. Such a great program. And then Heatherly is our coordinator from Sister Cities, Leroy Ayala, the executive director. The purpose of Sister City committees is exactly what, like President Eisenhower perceived and conceived in the 50s. Because it's a great thing that we have council generals, and we invite Indian council general also as well, because we believe in that we have to bring people together. We don't have to set them apart. So, it's about citizens to citizens diplomacy, which you saw in this play as well, Che Guevara coming from another part of the world,
having flamingo dance, having Fazlu, having Alice. So it just tells you that, it's not only the depth of everything. When we all come together, we can do wonders, we can do miracles. So let's continue our task. Let's be the true, sort of friends of truth and not timid friends. And that's what Chicago is all about. That when you come here, it opens up its arms. And that's what about Lahore is. Two world-class cities. I have to talk about that because that's what happens when two cities come together. Very fun things happen. सलाम नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान शिकागो। इस वक्त मेरे साथ कौंसल जनरल पाकिस्तान फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि सिस्टर सिटी शिकागो के ज़हर एहतमाम फैज़ अहमद फैज़ की यादगार में जो स्टेज ड्रामा हुआ उसके लिए आए, उनसे तासुरात पूछते हैं। जी अंसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिस्टर सिटीज़ को, फिर रियाज़ बाबर साहब को और सारी कास्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्हीं ने बर-ए-सग़ीर के एक बहुत बड़े शायर के ऊपर एक प्ले पेश किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शिकागो कल्चरल सेंटर में पूरा हॉल भरा हुआ था। और ये एक बहुत मुनफरद तरीका है कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान का अदब हम यहाँ पे पाकिस्तानी अमरीकियों को और अमरीकियों को भी हम रूशनास बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं बहुत मुबारकबाद दूँगा सबका, ख़ास तौर पे रियाज़ बाबर साहब का और सादिया उकैली का, जिन्होंने इस प्ले में एलिस फैज़ का किरदार अदा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंसार साहब। पहले तो सफ़ीर पाकिस्तान का कि आप आए और आपने आके इस बहुत उम्दा प्ले को कवर किया, और मैं मुबारकबाद दूंगा सादिया उकैली को और परफॉर्मेंस क्लब ऑफ शिकागो को, जिन्होंने ये तरतीब दी इस प्ले की। और आपको पता है कि फैज़ साहब की हस्ती जो हैं वो किसी भी वक्त में कैद नहीं की जा सकती। उन्होंने हमेशा एक आम आदमी के लिए एम्पावरमेंट की बात की और कोशिश की। हम उनकी अप्रोचेस से इख्तलाफात ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी हस्ती एक बहुत बड़ी हस्ती थी और उन्होंने पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, जमहूरी पाकिस्तान बनने में बहुत मदद दी, जो कि अब आप देखते हैं। चाहे जमहूरियत किसी भी तरह से आप उसे एवेलुएट करें, अच्छी बुरे तरीके से, लेकिन जमहूरियत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान को दस्तयाब है। और पाकिस्तान को नाज है फैज़ साहब जैसी हस्तियों के पाकिस्तान से मुंसलिक होने का। और आज आपने देखा कि सारे अमेरिका की कम्युनिटीज़ यहाँ आई, हिंदुस्तान से, यूरोप से, अमेरिकन, शिकागो, सब लोग साथ आए। इससे बेहतर कोई बात नहीं। यही मकसद है शिकागो लाहौर कमेटी का कि हम अच्छे उम्दा प्रोग्राम लाएं और शिकागो और लाहौर को, यानी कि यूएस और पाकिस्तान को एक दूसरे के बंधन में अच्छी तरह जकड़ते जाएं और इन रिश्तों को इस्तवार करें और हमेशा इनमें मोहब्बत बढ़ती रहे। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ मिलकर अपने पाकिस्तान, जो कि हमारा होमलैंड है, उसकी हम रोनुमाई करें, उसको यहाँ पर अच्छी तरह पेश करें और उसके लोगों की मदद करें और यहाँ के लोगों की मदद करें। तो ये हमारा मकसद था। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बस यही कहना है कि हम सबको एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होगा। पाकिस्तानी हो या शिकागोवान्स हो या अमेरिकन हो, दुनिया के किसी भी हिस्से के हों, आर्ट हर चीज़ को बराबर कर देता है। मेरा बहुत ऐन यकीन है कि अगर हम लोग ऐसे प्लेज़ और आर्ट के एग्ज़िबिट्स और कल्चरल ब्रिजेस बनाते रहेंगे तो हम सबका इसमें फ़ायदा है। मैं अपने कास्ट को, हम लोगों के और डॉक्टर बाबर को बुलाना चाहूँगी कि वो लोग मेरे पास आएँ और मैं जल्दी से उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकूँ। फैज़ समय से परे आज एक खूबसूरत स्टेज ड्रामा पेश किया गया, जिसमें शिकागो के मौजूदीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और साथ साथ यहाँ की अमेरिकन कम्युनिटी ने भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। और ख़ुसूसन सादिया उकैली और डॉक्टर तारिक भट्ट साहब और दूसरे ड्रामा कमेटी के मेम्बरान बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा स्टेज प्ले यहाँ पर मुनक्किद किया। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, शिकागो। नाज़रीन, पिछले माह डॉक्टर एजाज हुसैन की रिहाइशगाह पर जनाब मरूफ जय्यद शायर, जिनका पूरी दुनिया में अहले बैत में एक मुकाम आला है, उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ा अलैह की शान में हदीए अक़ीदत पेश किया। जनाब रेहान आदमी जियो टीवी के माह रमज़ान के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और मशहूर उन्वान और टॉपिक को नहायत ही खूबसूरत अल्फाजों से सजाकर पेश करने में महारत रखते हैं। आइए देखते हैं ये
हदिया अक़ीदत। जब कलम लिखने लगा हज़रत अब्बास का नाम, जब कलम लिखने लगा हज़रत अब्बास का नाम, फूल बन बन के खिला हज़रत अब्बास का नाम, फूल बन बन के खिला हज़रत अब्बास का नाम। हाँ उसी रोज फिजाओं में महक होती है, हाँ उसी रोज फिजाओं में महक होती है, चूमे जिस रोज हवा हज़रत अब्बास का नाम। तो मुश्किलें घटती गई, रास्ते हमवार हुए, मुश्किलें घटती गई, रास्ते हमवार हुए, लेके मैं घर से चला हज़रत अब्बास का नाम, लेके मैं घर से चला हज़रत अब्बास का नाम। शेर देखिए तो मौजे खुश हो के कदम चूमने आई मेरे, मौजे खुश हो के कदम चूमने आई मेरे, मैंने साहिल पा लिया हज़रत अब्बास का नाम, मैंने साहिल पे दिया। तो मुश्किलें आके मेरे पास पड़ी मुश्किल में, मुश्किलें आके मेरे पास पड़ी मुश्किल में, उनको भी लेना पड़ा हज़रत अब्बास का नाम, उनको भी लेना पड़ा। तूर पर आपको मूसा ना खिजालत होती, तूर पर आपको मूसा ना खिजालत होती, ये हुआ याद न था हज़रत अब्बास का नाम। थी कड़ी धूप मगर मुझ पे घना साया था, थी कड़ी धूप मगर मुझ पे घना साया था, बस मेरे ज़हन में था हज़रत अब्बास का नाम। तो मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे। मेरा नाम सुहेल मसूद है, मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं।
हम हर तरह की बीमारियां ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियां ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान भी सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस बार सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट शिकागो में होगी। डेट फाइनल हम कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और अब कोई भी शख्स, दानिश्वर, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो समझता है कि वो इस काबिल है कि उसको अवार्ड से नवाजा जाए और कोई रिकमेंडेशन है आपकी, तो सफ़ीर पाकिस्तान से ज़रूर रब्ता कायम करें। हमारे ब्यूरो चीफ हर जगह हैं, ह्यूस्टन, डैलस, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, वर्जीनिया, हर जगह नुमाइंदे हैं। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स है और आप चाहते हैं कि आप उसको सफ़ीर पाकिस्तान की ज़ीनत बनाएं और जियो पे लॉन्च करें, तो यू आर मोर देन वेलकम। नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे दिया जाएगा इस जुम्मे के साथ, जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इत्तेहाद से रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।